Hello friends, welcome to my channel. Please like, share and subscribe. Topic for today is measures of dispersion. सबसे पहले हम लोग कुछ important formulas देखेंगे followed by important questions. So without any further delay, let's begin our class. Dispersion यानी कि फैलाव, हमारा distribution कितना फैला हुआ है. Measures of dispersion are of two types, absolute measures and relative measures. Absolute measures further classified into range, quartile deviation, mean absolute deviation and standard deviation. Relative measures further classified into coefficient of variation, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation. अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं. फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेंज. इन फार्मूलाज को आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड फॉर डिस्क्रीट एंड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. Formula for the calculation of standard deviation for individual series and for discrete and continuous series. Formula for the calculation of coefficient of variation. Formula for the calculation of combined standard deviation. Percentage of items like between specific sigma limits. Within 1 sigma limits 68.27%, between 2 sigma limits 95.45%, within 3 sigma limits 99.73%. आइए अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 800, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 120, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, ये है फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है नीचे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन डेविएशन इनटू 100. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 120, मीन इज इक्वल टू 800. आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15%. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एरर दैट विल क्रीप इनटू द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुपिंग एरर. दैट इज Option 1. The variance of data 5, 11, 13, 19, 20 is 37.5. The variance of data 7, 13, 15, 21, 22 is equal to 37.5 because since variation is independent of change of origin. यानी कि अगर हम लोग अपने डेटा में प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे डेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. Fourth question, the coefficient of variance of a data is 25% and the mean is 20. Then the standard deviation of the data set is, ये आप लोगों का फॉर्मूला लिखा है नीचे. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जगह आप लोग 25 रखेंगे, उसके बाद मीन की जगह आप लोग 20 रखेंगे. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 5.00. फिफ्थ क्वेश्चन, the variance of the data under consideration is 7. If each of the data points is multiplied by 3, then the variance of the new data is 21. Since variance is affected by change of scale, मतलब कि या हम लोग अपने डेटा पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा डेटा इफेक्ट होगा. मूविंग टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, the positive square root of the arithmetic mean of the square of the deviations of the given observation from the arithmetic mean is called standard deviation. Standard deviation का फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, आप लोग देख सकते हैं. The numerical value of the standard deviation can never be negative because square root में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती हैं. For the recorded observation, the ratios measured by absolute variation are called relative measures. The sum of all the squared deviations is divided by the total number of observations to calculate population variance, that is option 2. If the quartile range is 24, then the quartile deviation is
12 बिकॉज क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू क्वार्टाइल रेंज इज 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12. Okay, thanks for watching. Please like, share and subscribe.